Okay, I think we should start now. Good morning and Assalamu alaikum everyone. I welcome you all to our first webinar session held in collaboration between Zero Carbon Private Limited, Huawei Technologies and Baham Associates. Thank you for joining us today. All right. So the title of this webinar is PV Plant O&M with Huawei Solutions, Optimizing Performance and Reducing Cost. And we are really excited to share what we know with you. Well, special thanks to Huawei for giving us an opportunity to learn from each other and grow together by conducting such webinars. So moving forward, I'll begin with a quick introduction to our panelists. Okay. My name is Syeda Amera Mazhar, and I'm an electrical engineer working at Zero Carbon Private Limited as a key accounts manager. I'll be your moderator for today. Starting with my colleague and expert, Ansar Iqbal, working as lead APM at Zero Carbon Private Limited. He is an expert in O&M and he has various HSE-related certifications like CSC and WOSH and IOSH. He'll be giving us a brief introduction to the PV plant O&M. Also giving us strategies for reducing O&M costs and maximizing ROI. He'll be telling us or giving us an overview of the Awais solution and its features in this regard. So, introducing our second speaker, Awais Asmat. He is a service and project manager at Huawei Technologies. He is an electrical engineer and he possesses 7 to 8 years of diversified commercial, industrial, and utility scale experience in the power generation industry, from thermal power stations to renewable energy. He'll be speaking upon the topics like Huawei after-sales capability, also discussing real-world example of Huawei solution in action through a case study. Next, telling us success stories from the PV plant owners and operators who have implemented Huawei solutions. Last, we have Ansar Iqbal. He is the National Technical Manager at Baham Associates. He'll be speaking upon the topics like best practices that needs to be followed by the PV plant O&M. He'll be giving us tips for improving plant performance and reducing downtime. Also addressing common O&M challenges prevailing in the market. Okay. So, I want to thank our speakers for taking the time to share the knowledge and giving us a real-life example and insight on the PV plant O&M. So, coming to our topic, as we all know that the whole world is aiming at increasing their green energy, production countries are coming up with the large plant sizes and developers are looking forward to maximize their output through regular O&M checks. So, as a general concept, whenever it comes to the installation and commissioning for the solar PV plant, O&M is always a debatable topic. So specifically, commercial and industrial clients are more concerned while finalizing the techno-commercial offers. They are always keen to know about the O&M technical. They are always keen to know and have a discussion on technical aspects from O&M perspective. However, limiting ourselves to O&M with Huawei solution, we will explore how our speakers will give you practical tips that you can use by providing O&M to your PV plant. We will also take questions throughout the webinar, so please feel free to type them into the chat box. And now, without any further delays, let's start. Ansar Iqbal, you can present your slides. Yes. Assalamu alaikum to everyone. I'm audible. My name is Ansar Iqbal and I'm representing Zero Carbon. And agenda of my talk is introduction to the PV plant's strategies for reducing O&M cost and maximizing ROI, Huawei Solutions and its features.
So we can divide PV plant equipments into three categories: mechanical equipments, electrical equipments, HSE equipments, and performance related to facilities. And common costs associated with the PV plants are labor cost, equipment maintenance and repair cost, insurance and warranty cost, and the fourth one is monitoring cost. Labor cost including PV panel washing staff and the technical staff, and equipment maintenance as usual. Inverters, breakers, PV panels are there, so we need to maintain them and to minimize the cost. And insurance and warranty cost related to the inverters and PV panels. So our main strategy, our main goal is to reduce this cost by minimizing the downtime and improving the plant availability, so that so that the plant owner can timely get his investment back. So our strategy is using the smart technology tools related to artificial intelligence, smart big data analysis, monitoring system. So we can minimize the downtime and improve the efficiency of the plant. So we can use three types of maintenance techniques: preventive, predictive, and corrective maintenance. Preventive maintenance is carried out on weekly, monthly, and yearly basis. Predictive maintenance is carried out through the smart tools related to AI and using API calls, big data, and all these. So in mechanical maintenance, we have different parts of plants, just like structure, panels, and there are other part of mechanical aspect. So जैसा कि हमारे PV मॉड्यूल्स क्लीनिंग की बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि ये एफिशिएंसी पर डायरेक्टली इम्पैक्ट करते हैं, और इनको वीकली बेसिस पे या डेली बेसिस पे, जैसा कि वहाँ पे इन्वायरमेंट है, और जो मेन चीज़ होती है वो सॉइलिंग लॉसेस पे डिपेंड कर रही होती है हमारी जो इनकी पीवी क्लीनिंग है। जो इसका स्केड्यूल होता है वो अकॉर्डिंग टू द वेदर और अकॉर्डिंग टू द एरिया हम स्पेसिफाई करते हैं। और ZRC एप्लीकेशन कई दफ़े ऐसे होता है कि हमारे जो स्ट्रक्चर होता है वो रस्टिंग हो रही होती है, तो हम उस रस्टिंग को बचाने के लिए अपने स्ट्रक्चर को ZRC की एप्लीकेशन करते हैं और उसकी लाइफ को बढ़ाते हैं, क्योंकि यही हमारा मेन एसेट होता है। तो एसेट अगर आपका लॉन्ग लाइफ होगा तो आपकी ROI जल्दी आ जाएगी। और स्ट्रक्चर टाइटनिंग कई दफ़े ऐसे होता है इंडस्ट्रियल एरियाज में, आपके PV पैनल PV प्लांट होता है, तो वाइब्रेशन की वजह से मशीन्स क्योंकि वर्क कर रही होती है, तो उनकी वाइब्रेशन की वजह से हमारे जो बोल्ट्स वगैरह होते हैं स्ट्रक्चर के, तो वो लूज हो जाते हैं। तो उनकी टाइटनिंग के लिए भी स्केड्यूल होता है, प्रॉपर उनकी मेंटेनेंस होती है, ताकि वो प्रॉपर फिक्स अपनी जगह पे रहें। इन्वर्टर मेंटेनेंस, क्योंकि हवावे के इन्वर्टर मेंटेनेंस फ्री है, तो इसके लिए ऐसा जरूरत नहीं है, लेकिन क्लीनिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसमें, क्योंकि अगर आप उसकी क्लीनिंग नहीं करेंगे तो वो डस्ट अकोमोडेशन होगी, तो डस्ट अकोमोडेशन होने की वजह से जो इन्वर्टर का टेम्परेचर होता है वो इंक्रीज करता है, और टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से इन्वर्टर आपका डिग्रेडेशन की तरफ चला जाता है। सो ये कुछ पिक्चर्स हैं हमारी प्लांट साइट की, जहाँ पे हम रेगुलर बेसिस पे इन्वर्टर्स की क्लीनिंग करते रहते हैं। सो इलेक्ट्रिकल साइड की तरफ देखें तो हमारे पास 3 से 4 मेजर चीजें होती हैं: MC4s, SPDs, DCAC वायरिंग, इन्वर्टर्स एंड LV पैनल्स। तो जो MC4s होते हैं उनके मोस्टली लूज कनेक्शन होने की वजह से या ओवर हीटिंग होने की वजह से बर्न आउट हो जाते हैं, तो उनकी टाइमली रिप्लेसमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। और SPDs वगैरह भी अगर ट्रिगर हो जाती हैं तो उनकी भी रिप्लेसमेंट काफी जरूरी होती है, उनके फ्यूज वगैरह की। और DC वायरिंग और AC वायरिंग की साइड पे जाएं तो आपकी DC वायरिंग पे मोस्टली फॉल्ट्स आते हैं इंसुलेशन रेजिस्टेंस टाइप के, तो इस चीजों को भी कैटर करना बहुत जरूरी होता है कि अगर इंसुलेशन रेजिस्टेंस पे जाएगा तो आपका इन्वर्टर ट्रिप कंडीशन में होगा, तो आपका इन्वर्टर वर्क नहीं कर रहा होगा। सो LV पैनल वाली साइड पे तो हमारे ब्रेकर्स वगैरह लगे होते हैं, तो उनकी भी मेंटेनेंस बहुत जरूरी है। कई दफा होता है कि वाटर इंग्रेस कर रहा होता है, तो वहाँ पे क्योंकि ये IP हमारे तो मोस्टली पाकिस्तान में स्टैंडर्ड फॉलो नहीं किया जाता, तो उसकी वजह से हमें डस्ट क्लीनिंग वगैरह लाजमी करनी चाहिए, क्योंकि डस्ट फॉर्मुलेशन होती है जिसकी वजह से स्पार्क का खतरा होता
ये रूडेंट इन हो जाते हैं तो भी करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो एलवी पैनल्स की मेंटेनेंस बहुत ज्यादा अहम रोल प्ले करती है। उनके टर्मिनेशन पॉइंट को ब्रेकर को क्लीन होने चाहिए, वो ब्लोड वगैरह करना चाहिए ऑन अ रेगुलर बेसिस, मंथली, वीकली, अगेन डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन ऑफ द साइट। HSE इक्विपमेंट्स किसी भी प्लांट पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं हमारी लेबर की सेफ्टी की रिलेटेड और हमारी प्लांट की सेफ्टी की रिलेटेड। इसमें सबसे अहम चीज़ है फायर एक्सटिंग्विशर। तो हम मोस्टली DCP यूज़ करते हैं हमारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स पे। तो उसकी प्रॉपर मेंटेनेंस होनी चाहिए, चेक्स वगैरह उस पर टैक्स वगैरह लगे होने चाहिए, वो प्रॉपर वर्किंग कंडीशन में होना चाहिए, ताकि इन केस ऑफ अनवांटेड कंडीशन वी कैन यूज इट। So second part is where personal protective equipment. It's directly related to the labor side, and you have to them in a good condition, just like a safety harness, helmets, and the second part is insulated to. And the fourth and important part is facility performance diagnostics. जीरो कार्बन के पास डिफरेंट काइंड के स्मार्ट टूल्स हैं जिनके जरिए वो O&M करती है, ताकि अपने प्लांट को मॉनिटर करे रिमोट साइड पे, क्योंकि आपके टेक्निकल रिसोर्सेज हैं वो शेयर्ड रिसोर्सेज यूज हो रहे होते हैं, ताकि इनकी कॉस्ट कम हो जाए, ताकि कम से कम इम्पैक्ट आए आपके टेक्निकल टीम का आपकी O&M कॉस्ट पे। तो उसके लिए डिफरेंट काइंड के टूल्स यूज किए जाते हैं, जस्ट लाइक फ्यूजन ऐप and web portal. IV Diagnostic is a smart tool provided by the Huawei site, and there are some other tools related to the, just like Zero Carbon using its own app by using the API call from the Fusion app. तो फ्यूजन ऐप की API को कॉल करके जीरो कार्बन की एक अपनी ऐप भी है, जिसके जरिए वो क्लाइंट्स को कस्टमाइज रिपोर्टिंग करती है और कस्टमाइज डाटा देती है। स्मार्ट हवावे के स्मार्ट IV कर्व से पहले हमें साइट्स पे जाना पड़ता था और IV कर्व डायग्नोस्टिक को रन करना पड़ता था, और इट टुक अ होल डे ऑलमोस्ट टू कंप्लीट 1 मेगावाट साइट। लेकिन अब आप रिमोटली साइट पे बैठ के विद इन मिनट्स आप इनको IV कर्व डायग्नोस्टिक को यूज कर सकते हैं। और एक ये स्मार्ट AI टूल है जो कि हवावे का बिल्ड इन है, और इससे परचेज करके ले सकते हैं। ये जीरो कार्बन की ऐप का इंटरफेस है, जिसमें हम कस्टमाइज रिपोर्ट करते हैं और अपने हमारा जो नॉक यहाँ पे है तो उसमें भी यूज करते हैं, और जो ऑनर है, प्लांट ऑनर, उनको कस्टमाइज रिपोर्टिंग करते हैं मंथली ईयरली बेसिस पे। ये स्ट्रिंग लेवल मॉनिटरिंग है इन्वर्टर्स की, जो कि आप कर सकते हैं, और जिसमें आप इसके डिवाइस मैनेजमेंट में जाके आप हिस्टोरिकल डाटा देख सकते हैं। आप देख सकते हैं आपकी कौन सी स्ट्रिंग या कौन सा इन्वर्टर आपका अंडर परफॉर्म कर, उसका आप कंपैरिजन कर सकते हैं। डाटा एनालिसिस बहुत अहम रोल प्ले करता है आपकी O&M में। आपको अपडेट रहना पड़ता है आपका कौन सा इन्वर्टर अंडर परफॉर्म कर रहा है और उसमें क्या इश्यूज हो सकते हैं, ताकि आप टाइमली उसे रेक्टिफाई करें। ये केस स्टडी है, ये हमारा एक प्लांट है, PPA बेस्ड है। तो यहाँ पे जो प्लांट ऑनर थे, उन्होंने स्ट्रीम की पाइपलाइन PV पैनल्स के ऊपर से गुजार दी, तो शेडो आ रहा था वहाँ पे। शेडो इशू आने की वजह से हमारे एनर्जी लॉस हो रहा था। तो फिर हमने उसको कैलकुलेट किया यूजिंग द डाटा प्रोवाइडेड बाय द फ्यूजन ऐप। तो उसे यूज करके फिर हमने उन्हें बिल्ड किया और उस पर करेक्टिव एक्शन लेके इसे रिमूव किया इस साइड। ट्रबल शूटिंग प्रोसेस जो होता है हमारा, किसी भी कोई इशू आ जाता है तो उसको सबसे पहले रेक्टिफाई करना एक बहुत बड़ा इशू होता है, और आपको पता नहीं होता भी उसमें पॉसिबल कॉजेज क्या हो सकते हैं। तो उसके लिए भी एक बहुत अच्छी इन्होंने हवावे ऐप एक अच्छी ऑप्शन मौजूद है अलार्म की सूरत में। तो आप जहाँ पे अलार्म सेक्शन में जाके आप हिस्टोरिकल अलार्म देख सकते हैं और एक्टिव अलार्म देख सकते हैं, और उसके पॉसिबल कॉजेज भी दे सकते हैं। अगर आपको टाइमली इशू का पता चल जाएगा तो आप टाइमली जाके उसे रिजॉल्व कर सकते हैं और करेक्टिव एक्शन ले सकते हैं। तो इससे आपका जो डाउन टाइम है उसे हम मिनिमाइज कर सकते हैं, जो कि डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है आपके ROI पे। और वारंटी कॉस्ट होती है कि कुछ इन्वर्टर्स आपको रिप्लेसेबल वारंटी देते हैं, कुछ
इन्वर्टर्स आपको पार्ट्स की वारंटी देते हैं, तो हवावे में एक चीज़ अच्छी है कि ये आपको 5 ईयर की रिप्लेसमेंट वारंटी देता है अगर आपके इन्वर्टर्स 20 KTL से अबव हैं, और जो 25 KTL तक हैं उनकी 10 ईयर्स की वारंटी देता है, तो आपको वारंटी की कॉस्ट पे कंप्रोमाइज नहीं करना पड़ता और आपको ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपको रिप्लेस करके देते हैं. And that's all from my side. Over to you, ma'am. All right. Thank you, Ansar, for giving us a brief introduction, and you have discussed a lot, and for sharing all such details, very important details. Now, our second speaker is Ansar Iqbal. He'll be sharing and telling us. So, Ansar. Thank you, Amira, for handing over to me. My topic is how the Huawei solution addresses the common O&M challenges, and how it provides the best solution and best operation to recover the O&M. Next slide. Okay, Huawei solution is upgraded to Fusion Solar 8.0, which guarantees higher yields in comparison with other competitors. And it has actually yield is depend upon two things. The first one is the product quality, and the second one is the failure ratio. So Huawei has a very low failure ratio that improved the yield by 1% and has the smart SDS facility to further improve the yield by 1%. It also provides the smart O&M, which saves the operation time in comparison with other centralized plants by 26.6%, and provides a smart IV curve analysis. Actually, smart IV curve analysis जो है ये use होता है to check the health of your panels and the efficiency of your panels, or it saves much time, and also it gives accurate detection of faults by the diagnosis from online portal of Huawei. It also provides the safe and reliable equipment, and has the higher availability percentage of 99%. You provide the extra protections like smart string level disconnector and smart connector temperature detection. The smart string level disconnector का purpose ये होता है कि if there would be any fault or in any short circuit at the string side, that can damage the inverter, and that also can ignite the fire as well. So this feature actually relates that the inverter detect the fault accurately, and it isolate the inverter within the short interval of time. और अगर इसमें लॉन्ग इंटरवल पे कोई स्विचिंग हो रही होती है तो फिर डेफिनेटली इट इग्निट द फायर. और स्मार्ट कनेक्टेड टेम्परेचर डिटेक्शन में ये है कि अगर कहीं पे कोई कनेक्शन डैमेज होता है या कहीं पे कोई MC4 कनेक्टर्स इन्वर्टर्स के साथ लगे होते हैं, अगर वो उसमें कोई लूज कनेक्शन होता है तो बिफोर प्रोड्यूसिंग एन आर्क द टेम्परेचर ऑफ द connectors got rise, तो उसको डिटेक्ट करते हुए the inverter automatically isolates the string from the inverter. It also has good percentage of operating with a grid, and the ACR is equal to 1.1. That guarantees that results the 100% operation of the inverter, and has very minimum harmonic distortion. Harmonic distortion is actually disturbing the frequency of the grid connection, and it also supports the goose and ambus communication. Goose communication protocol is basically used for information exchange between intelligent electronic devices over the Ethernet, and by this communication protocol, you can push the alarm messages through the email to the subscribers so that they can take the actions, the required actions properly. Next slide, please. Okay, Huawei Fusion Solar portal provides the multi-level management and comprehensive monitoring of plant status. और इसमें ये होता है कि आप
का जो O&M time है, that is definitely reduced if you are monitoring your plant properly and if you have a proper comparison of different plants efficiency. और इसमें we have 4 different levels of monitoring. The first one is the plant level monitoring. In plant level monitoring, you can visualize the operation status of whole plant. और उसमें there are alarms, visibility, and the KPI visualizations to compare the energy statistics and the revenue statistics of the different plants, and you can also compare the specific energy. Specific energy is actually defined parameter for the efficiency, for the comparison of efficiency of the different plants. It is actually the kilowatt hour per kilowatt per day. So by the comparison of specific energy of different plants, you can you can compare the efficiency of plants. And the second one is the array level or the container level monitoring. So at the array level monitoring, there are the real-time data available for PV arrays and the battery rack status, and you can have the running status of all these parameters, and you can adopt the physical layout visualization. तो अगर आप कहीं पे you are using optimizers, और वहाँ पे definitely with optimizers you can have the module level monitoring as well. तो वहाँ पे आपका जो site layout है, as per your site installation, आप एक physical layout design करते हैं और उस physical layout को आप upload कर देते हैं in portal के ऊपर. So you can have the physical layout visualization on the portal by using the optimizers. और the third one is the device or battery rack level monitoring. तो device level monitoring जो है, it provides the real time data of devices as well. कि अगर आप कहीं पे multiple inverters या multiple communication devices use कर रहे हैं and you have a third party energy analyzers as well, तो हर device का अलग से आप अगर data लेना चाह रहे हैं तो उसको आपको जो real time data है हर device का अलग से वो भी आप monitor कर सकते हैं. और similarly it also has the string level and battery cell level monitoring. और इसमें आपका जो string level के ऊपर आपका current voltage और power का एक real time data आ रहा होता है, आप उसको monitor कर सकते हैं. और then you can also monitor the cell temperature and the SOC as well, because battery's life actually depends upon two things. So for the first one is the controlled charging and discharging environment, and the second one is the temperature. तो आपका BMS जितना accurately monitor कर रहा होता है your battery's temperature, तो उतनी आपकी battery's life will be improved. Next slide, please. For the alarm reporting, the Huawei solution and the online portal actually provide accurate fault locating and shorter service interruption duration. You have 2 to 3 different interfaces to monitor the alarms. The first one is the on home page. आपको यहाँ पे भी आपको जो total plants हैं उनका status आ रहा होता है. अगर कहीं पे कोई faulty plants हैं तो then you can be highlighted on that. और उसमें फिर plant severity basis के ऊपर categorize किया जाता है कि either your plant is minor or major. और इसी categorization के ऊपर there is different color coding, और उससे भी आपको idea हो जाता है कि कौन सा plant जो है वो कहीं पे अगर major fault है, definitely at major fault the inverter stops the protection. तो वहाँ पे आपको पता चल जाता है कि how I have to prioritize my O&M scenario. तो मुझे अपनी टीम को कहाँ पे पहले डिप्यूट करना है ताकि जो और कहीं पे क्या क्रिटिकलिटी है साइट की, तो उसके मुताबिक जो है वो आप उसको मैनेज कर सकते हैं. और it also provides the accurate location without any manual inspection. So next slide please. Further with the alarm management, Huawei gives the IV curve diagnosis that is upgraded to 4.0 now. It is used for the online and full detection, and that reduce the O&M costs as well. Because in comparison with the traditional or conventional ways, it reduced the time to perform the IV curve analysis of PV panels. And based on the root cause analysis and the fault diagnosis efficiency,
there are 4 different categories and different levels that are defined by the regulations, the solutions given by different competitors of IV curve diagnosis. So isme jo the maximum level is the higher level available in the industry is the L4, and with the L4 with the defined L4 parameter आपकी जो fault diagnosis efficiency है that is maximum 90%, और जो Huawei solution provide कर रहा होता है Huawei IV curve diagnosis का, that is based on the AI factors, तो उसकी जो efficiency है that is 96.8%. So it is far beyond the defined parameters. और Huawei जो है ये use कर रहा होता है AI technology, AI technology, और उन basis पे it is upgrading its algorithms, or based on the self data learning techniques. It is getting data from different sites, and it is upgrading the algorithms to make the system more efficient, and to make the curve analysis report more efficient. Or it is widely used at the plants around in the world, around more than 15 gigawatt facility. Or in comparison with other competitive vendors, it has high multi-scenario adaptability. क्योंकि आप solar panels install कर रहे होते हैं, तो you have different sites, just like different layouts. कि कहीं पे rooftop mounted होता है, कहीं पे ground mounted होता है, कहीं पे hilly areas हैं. तो वहाँ पे जैसे hilly areas हैं, तो वहाँ पे आपका जो shadow analysis है, that is different from other sites. So it has the compatibility for all these kind of scenarios, or it also is compatible with the mainstream modules like half cell and shingle modules, and the different width module available in the market. It also provides energy yield loss assessment, और उसमें आपके string level जो अगर कहीं पे जिस string पे आपकी efficiency कम हो रही होती है, वहाँ पे आपको एक proper assessment मिल जाती है कि कहाँ पे जो मेरा loss है वो किस जगह पे आ रहा होता है. तो then you can have a correct location of the reduction of efficiency. Similarly, it provides the schedule scanning, और उस पे आप एक periodic diagnosis schedule कर सकते हैं, जिस बेस पे आपको एक email notification भी आ जाता है कि आप if you want to trigger, or you want to start the detection. And similarly, it can be integrated by by third-party portals as well, just like independent. If someone is using northbound interface and API account to monitor the PV plants on a third-party portal, तो आप वहाँ से भी उसको integrate कर सकते हैं. और इसमें it also has the refined data management and high availability of diagnosis report, और इसमें different levels of reports हैं. इसमें diagnosis report भी है. You can have a separate O&M report as well, or and you can have raw data for the customers, how you can recover your faults, or how you can rectify the under efficient strings. Next, please. Okay, Huawei solution also provide a coefficient of variation analysis. Actually, coefficient of variation analysis defines the consistency and the stable power generation of your plant. If it is low, then it means if this coefficient is low, it means working properly and your generation is proper. This factor, and by this feature, it quickly locates the less efficient strings to reduce the unnecessary site visits. Or isme based on the operating efficiency of the strings, it can be categorized and presented in different colors, or that facilitate you the accurate location of major problems, and
to know that reduce the time required for on-site troubleshooting. Or if your string is greater than, if your CV coefficient of variation is greater than 20%, it's mean there is some critical fault. It might be there is an open circuit from the DC string at the site, or agar this is from 10 to 20%, that is the major fault. Or major fault में ये होता है कि some of panels or some of branches may be abnormal, and अगर ये आपका 5 to 10% है, that is minor. और minor जो faults हैं, that may be due to the cleaning or some cable losses as well. और अगर आपका जो अगर it is from 0 to 5%, it means your plant is normal and your all PV strings are working normal. So by this feature you can save time and you can quickly locate your under efficient strings, and it is also provide an efficient way to further monitor your plants. Next. Here is a chart defining the operational expenditures, how we can reduce the O&M time, and definitely the time is the labor cost actually depending on the time, whatever your team is spending on the site. So here is a chart that provides the comparison between the centralized solution and the Huawei solution, and from this chart you can easily see that the Huawei solution had that is 26.6% time saving protocol from other centralized solution. Next, please. Okay, for the enhancement of further protections and for the upgradation safety, Huawei utilize SSLD tech. SSLD is basically strategies and skill learning development. It is a kind of self-learning techniques to further enhance and upgrade its firmwares and softwares for the detection of faults and the rapidly disconnection from the DC systems. The more than 75% faults may occur from the DC side, और इसमें जो root cause हो सकती है that कोई आपकी DC केबल डैमेज हो सकती है, DC ब्रेकर्स अगर आपने कोई एक्सटर्नल डिवाइसेस लगाई हैं उनका डैमेज हो सकता है, और इसी तरह से MC4 जो MC4 कनेक्टर्स हैं वो बर्न आउट हो सकते हैं. तो आपका जितना एक हाई प्रिसीजन होगी और जितना फास्ट रिस्पॉन्स होगा उस तरह से आप अगर आप प्रॉपरली उसको फॉल्ट को डिटेक्ट कर लेते हैं, देन यू द इक्विपमेंट नीड टू बी आइसोलेटेड फ्रॉम the system. और उसमें ये होता है कि अगर string fault का कोई connection है, then it has the disconnection time of less than 250 milliseconds. Similarly, if there is a fault of DC input string reverse flow, then inverter disconnect itself within less than 250 milliseconds. Or if there is any short circuit in the inverters, definitely the short circuit to inverter का है that triggers the fault for the external devices as well. तो आपकी जितनी भी वापडा के साथ डिवाइसेस लगी हुई हैं तो उसके लिए भी ये इशू कर सकता है. तो its disconnection time should be very less, और Huawei provides this time is less than 16 milliseconds. Next, please. Similarly, for अगर कहीं पे आपके जो DC कनेक्टर्स डैमेज होते हैं या DC कनेक्टर्स लूज हैं, तो DC कनेक्टर्स लूज होने की वजह से पीक आवर्स में आपके पास आर्क्स जनरेट होती हैं. सो बिफोर ट्रिगरिंग एन आर्क द टेम्परेचर ऑफ द कनेक्टर्स गॉट राइज, और दिस इज द न्यू फीचर ऑफ Huawei प्रोडक्ट्स. तो Huawei जो है इट monitors the temperature and sense the temperature at the connectors level. तो हर कनेक्टर का टेम्परेचर ये मॉनिटर कर रहा होता है. तो if there is any abnormal behavior of temperature, तो वहाँ वो automatically inverter isolate your string or your connector from the inverter so that there would not be any major fault or major damage of the inverter. So ये एक बहुत अहम फीचर है. Next.
It also uses the smart self-clean fan in the inverters as the high reliability design, और इसमें IP68 protection है, aluminium frame design है. It also has high temperature resistance grease और smart speed control feature, और इसकी जो design life है that is more than 200,000 hours. और self cleaning feature is just like जब आपका इन्वर्टर स्टार्ट हो रहा है या फैन स्टार्ट होता है, it just start operating reversely and the start and then it turns forward. तो उससे क्या होता है कि जो इसके ब्लेड के ऊपर जितनी भी डस्ट जमी होती है या जितनी भी डस्ट उसके ऊपर होती है, बहुत सारी डस्ट जो है वो रिमूव हो जाती है. तो ये एक सेल्फ क्लीनिंग एक टेक्निक है that is used by the fans in the inverters of Huawei. और Huawei के जो इन्वर्टर्स हैं above 60% उनमें फैंस एक्चुअली यूज होते हैं. जो लेस देन 60% है नेचर कूल. नेक्स्ट. Huawei provides the IP66 protection grade equipment, और उसमें जो जितने भी इन्वर्टर का चैम्बर जो है उसको आप ओपन नहीं कर सकते डेफिनेटली अगर और कोई भी कनेक्टिविटी ऐसी नहीं है जो इनसाइड द चैम्बर हो. और फॉर एक्सटर्नल कनेक्शंस लाइक ग्रिड इट हैज डिफरेंट, इट हैज सेपरेट चैम्बर, और उससे कोई भी डस्ट आपकी जो है वो मेन सर्किट के ऊपर नहीं जा रही होती. और similarly it also the Huawei inverters are also tested at harsh environments with different severity levels. Next please. Okay, Huawei जो solution provide करता है that is fuse free design, और we do not recommend to use redundant or duplicate devices just like external fuses or SPD devices, because we Huawei quote that हम internally उसकी protections जो हैं वो provide करते हैं, इसलिए आपको separate devices लगाने की जरूरत नहीं है. because अगर आप जितनी भी duplicate devices जो है वो add करते जाते हैं उतना उसका fault ratio जो है वो risk of fault जो है that increases with that devices. और इसी तरह से क्योंकि there is no any repairing required, Huawei provides the replacement for each unit, तो कोई manual O&M आपको required नहीं होती. that also reduce your downtime of inverters in case of any fault, क्योंकि अगर आप prepare करते हैं तो it takes time for the transportation from site to the lab and then from lab to your site, और उससे भी आपका एक time consuming ज़्यादा होती है. तो अगर replacement unit है तो that takes maximum 2 hours to replace the units. Next please. It also provides the smart grid connection and robust operation under all grid scenarios, क्योंकि grid जो है उसमें एक variation रहती है, voltage की fluctuation वगैरह रहती है. तो जो Huawei inverters हैं that use the LVRT and HVRT features, low voltage and high voltage right through, if there would be any kind of over voltage or low voltage scenario for very short time interval. तो उस सिनेरियो में जो बाकी जो इन्वर्टर्स हैं that got shuts down, और फिर दोबारा से जब फॉल्ट रेक्टिफाई होता है या ऑटोमेटिकली इट गॉट रिकवर, तो वो दोबारा से ऑन होते हैं और इसमें भी आपका एक एनर्जी लॉस होता है. जो Huawei इन्वर्टर्स हैं वो उस टाइम पे ऑफ नहीं खुद को करते और इट प्रोड्यूस द रिक्वायर्ड प्रोडक्शन. और इसी तरह से इसको जो मॉनिटर करने के लिए जो सिमुलेशंस की जाती हैं, डेटा डिजिटल सिमुलेशंस टू एनालाइज द ग्रिड कोड, और ग्रिड कोड मॉडलिंग के लिए डिजिटल सिमुलेशंस की जाती हैं. सिमिलरली देन इट इज सेमी फिजिकल सिमुलेशंस और रियल टाइम टेस्टिंग भी की जाती है कि हाउ द प्रोडक्ट्स आर कंपैटिबल विद द grids. Next please. Here is a case study comparison with centralized solution and with Huawei Smart PV solution. और यहाँ पे देखें तो Huawei Smart PV solution the ACR is 1.85%, and that is more, and by the functionality of by the option of LVRT, it ensures the stable operation with variations in the grid, with the small variations in the grid. Next please.
Okay, now my topic is what are the best practices with the Huawei products you can have for the O&M. तो पहली बात तो ये है कि आप अपने सिस्टम को मॉनिटर प्रॉपरली करते रहें, रेगुलर मॉनिटर करते रहें, और इसको डेफिनेटली मॉनिटरिंग में आपके पास अलार्म्स आ जाते हैं, और फिर उसका एक एनर्जी कंपैरिजन होता है, जिस बेस पे आपको एक एनालिसिस मिल जाता है कि अगर कोई अंडर एफिशिएंट प्लान परफॉर्म कर रहा है तो उसके ऊपर आप अपनी टीम को डिप्यूट कर सकते हैं। और इसी तरह से क्योंकि Huawei एक्चुअली यूज द AI सेल्फ लर्निंग टेक्निक्स, और उसके साथ ये विद टाइम इट हैज अपग्रेडेशंस ऑफ द फर्मवेयर्स, तो आप इसको टाइमली जो इसके फर्मवेयर हैं वो अपग्रेड करते रहें डिवाइसेस के, और ये फर्मवेयर अपग्रेडेशंस आप लोकली भी कर सकते हैं और रिमोटली फैसिलिटी भी अवेलेबल है ऑन द पोर्टल। द सेकंड वन इज कि योर जो आपकी इंस्टॉलेशन है और आपकी जो कनेक्शंस हैं दैट शुड बी प्रॉपर, और जो कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पैरामीटर्स है दैट शुड बी अकॉर्डिंग टू द साइट एंड अकॉर्डिंग टू द रीजन, और सिमिलरली आपकी जो अर्थिंग है दैट शुड बी प्रॉपर। और अगर इफ देयर इज एनी फॉल्ट के कहीं पे रिवर्स पोलैरिटी अलार्म का एक फॉल्ट आ जाता है, तो इन दैट सिनेरियो आप अगर पीक आवर्स में साइट पे हैं तो आप उसके जो MC4s हैं आप रिमूव नहीं करेंगे, यू जस्ट नीड टू वेट टिल द नाइट व्हेन योर DC करंट रिड्यूस टू 0.5 एम्पेयर, और फिर आप उसको रिमूव करके यू हैव टू रेक्टिफाई द फॉल्ट, और आप फिर उसको रिकनेक्ट कर दें, क्योंकि ड्यूरिंग पीक आवर्स अगर आप करते हैं तो देयर इज सम रिवर्स करंट फ्लोइंग इन द पैनल्स, और उससे आपका कोई आर्क जनरेट हो सकता है। और इसी तरह से इसके लिए जरूरी है कि आपका जो O&M स्टाफ है दैट शुड बी ट्रेन प्रॉपरली, और उसके लिए Huawei इज कंडक्टिंग ट्रेनिंग्स एंड वेबिनार्स टू एजुकेट द इंस्टॉलर्स how to deal with the inverters and the Huawei Solutions. Next, please. Okay, next topic is how we can improve the plant performance. Next. इसमें कुछ डिफरेंट स्टेप्स हैं। द फर्स्ट वन इज द परफॉर्म रेगुलर टेस्ट, और इसकी आप जो एक्सपेक्टेड टारगेट्स हैं आप उसको कंपेयर करते रहें। अगर इट इज नॉट मीटिंग विद द एक्सपेक्टेड जनरेशन तो देन डेफिनेटली योर स्ट्रिंग्स आर परफॉर्मिंग अंडर एफिशिएंसी। और सिमिलरली आप एक एक्यूरेट और अप टू डेट अगर रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं और उसमें एनर्जी लॉस का रिकॉर्ड भी हो सकता है, और इसी तरह से मेंटेनेंस हिस्ट्री भी है। मेंटेनेंस हिस्ट्री के रिकॉर्ड से ये फायदा होता है कि अगर उसी तरह का फॉल्ट दोबारा से अगर हुआ है तो देन योर टीम में नो टाइमली के हम उसके ऊपर क्या रेक्टिफिकेशन जो कर सकते हैं। इसी तरह से प्रिवेंटिव मेंटेनेंस टेक्निक्स यूज करते हुए आपको जो है वो इन्वर्टर की केबल्स और केबल ट्रेस को जो है वो चेक करते रहना चाहिए कि अगर कहीं पे डैमेजेस हैं तो वो कोई भी पोटेंशियल इश्यूज हैं वो टाइमली रिमूव किए जा सकते हैं। इसी तरह से टेम्परेचर का इन्वर्टर्स और रूम टेम्परेचर जो उसको प्रॉपरली मॉनिटर करते रहना चाहिए। अगर कहीं पे टेम्परेचर राइज हो रहा है तो then you have to install some cooling environment so that there would not be any derating from inverter side, और जो the surrounding should be safe and dry, और it should be clean के आपका जो ज़ाहिर है अगर dust particles ज़्यादा होंगे that would affect the operation of the fans as well। और उसमें यह है कि आपको एक इमरजेंसी रिस्पांस प्लान जो है वो ब्रीफ करना होता है कि अगर कहीं पे कोई इमरजेंसी आपको डिप्यूट करनी पड़ती है टीम तो देन व्हाट वुड बी योर प्लान। So that's all from my end. Thank you. Thank you, Ansar, for such comprehensive and detailed coverage on the topic. Now we will move to our last speaker, Mr. Awais Asmat. Hello everybody, assalamu alaikum to all. First of all, thank you all for joining this webinar session. So my colleague Hamza and Ansar briefed a lot of things according to O&M, reducing cost and how you can improve technically at your plant site. So next slide please. Let me brief on Huawei capabilities. Basically my topic is to show you how Huawei is operating their network in Pakistan and in O&M side, as we have replacement warranties here, and our team is O&M team is also here in लाहौर, इस्लामाबाद एंड कराची साइड। सो अगर हम देखें तो सबसे पहले Huawei का जो एक कैपेबिलिटी लेवल है O&M साइड से हम सॉफ्टवेयर बेस कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, उसके बाद हम टेक्निकल साइड से कैसे उसको सारी चीज़ों को रिड्यूस कर सकते हैं, वो हमजा ने और अंसर ने बड़ा ब्रीफली आप सबको यहाँ पे बयान किया।
अब उसके बाद यह है कि अगर इन्वर्टर की वारंटी होती है और आपको एक सेटिस्फेक्शन लेवल कैसे मिलता है, उसका मैं आपको एक ब्रीफ कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर देखें तो हमारे पास ग्लोबली हवावे के 3 टेक सेंटर है जो आपके वारंटी केसेस को और आपकी क्यूरीज को जो है टैकल कर रहे होते हैं। आपको उस पर टिकट जनरेट होती है और उस पर आपको असिस्टेंस मिल रही होती है, जिसमें जो रोमानिया सेंटर है वो आपको बेसिक हमारे एरिया को टारगेट कर रहा होता है और आपको फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा होता है अकॉर्डिंग टू योर टिकट जनरेशन एंड योर क्यूरीज। उसके बाद रीजनल ऑफिस हमारे पास जो है वो 9 के करीब आ जाते हैं। फिर ट्रेनिंग सेंटर्स आर देयर एंड 45% ऑफ एम्प्लॉयज आर एंड डी साइड, जो आपको बैक एंड पे हमारे O&M पर्सनल्स को ट्रेनिंग भी दे रहे होते हैं और टाइम टू टाइम फर्मवेयर अपडेट कर रहे होते हैं, इश्यूज को बग्स को रिमूव कर रहे होते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अगर हम पाकिस्तान की स्पेसिफिकली बात करें तो पाकिस्तान में हुआवे का जो नेटवर्क है उसमें 3 हमारे लोकल ऑफिस हैं बाय हुआवे एंड वी हैव 10 वेयर हाउसेज फ्रॉम वेयर वी कैन डिलीवर यू द इन्वर्टर एज सून एज पॉसिबल। जो हमारी कोशिश होती है कि हमारा 2 दिन का SLA होता है राइट आफ्टर आपकी जो टिकट है उसकी अप्रूवल हो जाती है फ्रॉम टैक्स सेंटर, तो विद इन 2 days वी हैव टू कमिट यू टू डिलीवर द स्पेयर पार्ट एट योर साइट। एंड उसमें अगर देखें तो हमारे पास रिटर्न भी हम खुद ही करते हैं, फुल रिप्लेसमेंट है इसमें, कोई आपको ये नहीं है कि ना रिपेयर वारंटी मिलेगी ना आपको कोई इसको रिपेयरिंग लैब हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है। हम सिर्फ और सिर्फ प्लेसमेंट दे रहे होते हैं, जिसकी मेनली रीज़न ये है कि हमारी 0.5 से नीचे रिप्लेसमेंट होती है, जिसमें हमें कोई इशू नहीं होता रिप्लेसमेंट देने में। और उसके अलावा जो हमारे पास अगर देखें तो मेन एंड पे लीड कर रहे होते हैं वो हमारे पार्टनर साइड से होते हैं। तो पार्टनर साइड से हमारे पास जो O&M के पर्सन हैं, मिस्टर अंसर इज आल्सो इन दिस सेशन, हमारे पार्टनर साइड से मेन आपको लीड कर रहे होते हैं और आपको फ्रंट लाइन के तौर पे डील कर रहे होते हैं आपकी सारी क्यूरीज को। नेक्स्ट प्लीज। बेसिकली आप एक टैक्स सेंटर से रब्ता कैसे करते हैं? जब आपकी कोई क्यूरी आती है आप उसको, हमारे पास उसके 2 तरीके होते हैं। एक तो हमारे पास हॉटलाइन है जिस पे आप कॉल करके रोमानिया सेंटर से जो है रोमानिया सेंटर से जो है आप रब्ता करके अपनी क्यूरी डिस्क्राइब करते हैं और उसका सोल्यूशन ले लेते हैं। लेकिन मेनली जो हमारा यहाँ पे पाकिस्तान में ऑपरेट कर रहा होता है नेटवर्क, वो बाय EU सपोर्ट वेबसाइट है। आप अपना सीरियल नंबर सब्जेक्ट में लिखते हैं, एक अपनी थोड़ा सा ब्रीफ करते हैं डिटेल अपने इशू की, अपने इन्वर्टर से रिलेटेड जो आपको इशू फेस करना पड़ रहा है। उसके बाद आपका जो स्क्रीनशॉट्स हैं वो आप ले लेते हैं और लॉग्स जो हैं वो डाउनलोड करके ईमेल में अटैच कर देते हैं। मैक्सिमम डाटा अगर आप अटैच करते हैं तो आपके लिए फ़ायदा होता है, ताकि आपकी टिकट जनरेट हो और राइट आफ्टर आपकी विद इन 1 आवर आपकी टिकट जनरेट हो जाती है और विद इन सेम डे आपको सोल्यूशन मिल जाता है या आपको रिप्लेसमेंट की अप्रूवल आ जाती है। नेक्स्ट। अगर हम रेजिडेंशियल में बात करें तो रेजिडेंशियल में हमारे पास जो इन्वर्टर्स हैं उनकी वारंटी आपको 10 साल मिलती है। जो हमारे पास एक्सेसरीज हैं, डोंगल, स्मार्ट सेंसर और स्मार्ट लॉगर, इनकी आपको 1 ईयर ऑफ वारंटी मिलती है। देन हमारे पास स्मार्ट ऑप्टिमाइजर आ जाते हैं जो आपको 25 साल की वारंटी के साथ मिलते हैं, जो कि आपके प्लांट की एफिशिएंसी को बढ़ाते हैं। नेक्स्ट। इसमें अगर हम CNI की बात करें और यूटिलिटी इन्वर्टर्स की बात करें तो उसमें हमारे पास 5 इयर्स ऑफ वारंटी आती है। उसके साथ हमारा जो यूटिलिटी साइड में 3000 एंड 6000 किलोवाट आवर का हमारे पास जो ट्रांसफार्मर होता है उसकी आपको हम 2 साल की वारंटी दे रहे होते हैं। और ये सारी वारंटीज जो है ये फुल रिप्लेसमेंट वारंटी होती है, रिपेयरिंग वारंटी नहीं होती। क्योंकि रिपेयरिंग वारंटी का मेनली हमें जो इशू आ रहा है वो ये होता है कि हमारी जो टेस्टिंग है वो बड़ी हार्श टेस्टिंग होती है। हमारे जो कोल्ड टेस्ट है, नॉइज टेस्ट है सारे, तो वो हर टेस्ट हम आपको नहीं दे सकते इन योर रीजन। सो उसमें ये होता है कि हम आपको इन्वर्टर रिप्लेस करने की मेन वजह ये होती है जो कि आपके पास जो न्यू इन्वर्टर आया है वो भी आपके पास उतना ही रिलायबल हो, उतना ही एफिशिएंट हो जितना कि आपके पास रिप्लेस होने के बाद इन्वर्टर आया है। नेक्स्ट। फिर एक सीरियल नंबर से आप वारंटी कैसे चेक कर सकते हैं? क्योंकि आजकल बहुत इंपोर्ट के इश्यूज हैं, उसकी वजह से हमारे पास ग्रे चैनल्स के इन्वर्टर्स लोग मुख्तलिफ डीलर्स और दूसरे जो हैं लेके आ रहे होते हैं, जिनको हमने एंड कस्टमर को डायरेक्ट